Good afternoon to all. So today we will solve some more questions of BARC 2021 examination. So I have already posted up to question number 4. So today I will solve some more question, that is question number 5 and 6. I will post it. Okay. So please subscribe my channel and like my channel so that I will be motivated to post more and more video related to BARC examination. So the question was like this: a particle of mass m is subjected to a force. So the force is given, the force is time dependent. So the force is F is equal to minus ax e to the power minus t by b in one dimension. Here a and b are positive constant. So what is the Hamiltonian age of the system? क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द हैमिल्टोनियन एज ऑफ द सिस्टम, वेयर स्मॉल एक्स एंड स्मॉल पी आर द कंजुगेट कोऑर्डिनेट एंड मोमेंटम रेस्पेक्टिवली. सो इन ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया था. सो दीज ऑप्शंस आर लाइक दिस. ओके, so how will proceed this? So we know that F is minus grad V, force is gradient of V. This is from the conservative concept of the force. We know that force is conservative, then force can be written as minus gradient of potential. This V is potential. Okay, so F is minus del V by del X. So del V कितना हो जाएगा? So del V is equal to minus F del X. So F dx. So V कितना हो जाएगा? V will be equal to minus इंटीग्रल ऑफ, दोनों साइड में इंटीग्रल लेंगे तो एफ डी एक्स. सो V इज इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स. तो F का वैल्यू हमको गिवन दिया है माइनस ए एक्स ई टू द पावर माइनस टी बाई बी. सो विल पुट दिस वैल्यूज माइनस ए एक्स ई टू द पावर माइनस टी बाई बी डी एक्स. नाउ we will perform the integration. So the integration ax e to the power a is a constant, so you can take it outside. E to the x e to the power minus t by b dx. So a e to the power minus t by b integration x dx. So this value will be like this, a e to the power minus t by b x dx का integration. So this will be a e to the power minus t by b x square by 2. Okay. Then we know that Hamiltonian is the sum of the kinetic energy and potential energy of the particle. So the kinetic energy is given by T and potential energy is V. So total Hamiltonian of the system will be P square by 2m plus half ax square e to the power minus T by B. Okay. Then the second question we will discuss. The canonical partition function for a gas system with n particles at temperature T, volume V. So this question, the option which option is correct? So D option will be correct. Okay, so next question, question number 6. Question number 6. So the canonical partition function for a gas system with n particles and temperature at temperature T, volume V, okay, and pressure P is given by this partition function is represented by Z. So this is equal to 1 by n factorial a v t whole to the power 2 by 3. Okay, whole to the power n. So here a is a constant. So the equation of state of the system is given by first option was given Pv equal to 2 by 3 n kBt. Second is Pv 3 by equal to 3 by 2 kBt. Third is Pv square is equal to nk t square tq, and pvq equal to nk t square, where we know kb is the Boltzmann constant. So first of all we know this z equal to given us 1 by n factorial a vt to the power 2 by 3 to the power n. So this is our equation 1. So from formula we know that the f value, okay, so f is equal to minus kbt ln z, okay, minus kbt ln z. So then minus kbt ln z का वैल्यू यहाँ डाल देंगे 1 by n factorial a vt to the power 2 by 3 to the power n. So minus kt ln a vt to the power 2 by 3 to the power n minus ln n
फैक्टोरियल, ये 1/n फैक्टोरियल, ये कितना हो जाएगा -ln n फैक्टोरियल. सो दिस विल बी माइनस के टी एन ln a vt टू द पावर 2/3. इसको सेपरेट कर देंगे, स्टर्लिंग थ्योरम लगा के इसको सेपरेट कर देंगे. तो स्टर्लिंग थ्योरम क्या बोलता है ना, ln n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n ln n minus n. Okay, so this we will use. So our equation will be like this: minus n kBt ln a vt to the power 2/3 minus n kBt ln n minus n kBt. So then we know that pressure is minus del F by del V at constant temperature. So इसको डिफरेंशियल हम कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम V. सो वॉल्यूम V विथ रेस्पेक्ट टू करेंगे तो ये हो जाएगा एन के बी टी इज कॉन्स्टेंट. सो इसका आ जाएगा कितना 1/a V टू द पावर 2/3 T टू द पावर 2/3, ये सेपरेट हो जाएगा. नेक्स्ट इसका वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा 2/3 V टू द पावर 2/3 -1 विच इज -1/3. ओके, सो दिस पार्ट विल बी एन के बी टी इंटू, यहाँ से आएगा कितना 2/3 V टू द पावर -1/3. यहाँ आएगा कितना ये T/3 टी टू द पावर 2/3 T टू द पावर 2/3 कट जाएगा. सो यहाँ आ जाएगा V टू द पावर 2/3. ओके, सो 2/3 एन के बी टी 1/V का हो जाएगा. टोटल पावर कितना हो जाएगा 2/3 प्लस 1/3. सो दिस विल बी 2/3 एन के बी टी डिवाइडेड बाई V. सो आवर ऑप्शन विल बी V इक्वल टू 2/3 एन के बी टी 2/3 एन के बी टी. सो भी इधर ले जाएंगे. सो P था 2/3 एन के बी टी बाई V. सो इधर P भी चला जाएगा. सो P भी हो जाएगा 2/3 एन के बी टी. सो व्हिच ऑप्शन विल बी करेक्ट? सो द ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट. सो ऑप्शन A option is correct. Thank you. So please like and subscribe my channel so that I'll be motivated to put on more and more exam question papers and solution. Thank you everyone.